अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डिजिटल डायरेक्शन। और आज हम हमारे स्टूडियो में हैं उवैस अहमद, ये फेमस यूट्यूबर सेनेटर वीरान ऐड से। और आज हम इनसे बात करेंगे जॉब मार्केट की 2021, दुबई जॉब मार्केट 2021 2022। तो सबसे पहले उवैस, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गिव योर वेलकम ऑन प्लेस, काइंडली गिव योर इंट्रोडक्शन। Thank you so much, Usman. It's a pleasure and honor to be here with you. Hello, everyone. My name is Ovais Ahmad, and I'm a digital marketing consultant and trainer. I have been in this industry for 10 years now. So, yeah, I have in my career, I have worked with Usman for a few years as well. We were working with the same agency. And yeah, currently I run a YouTube channel called Sanat Viran Ads. And happy to be here with you guys. Thank you very much, Uwais. Actually, I have lots of questions from the audience कि बहुत से लोग जो है दुबई में जॉब मार्केट के लिए अप्लाई करते हैं, और स्पेशली इन डिजिटल मार्केटिंग जो कि हमारा फोटे है। तो कुछ क्वेश्चंस, मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, तो आई विल आस्क 10 क्वेश्चंस और यू कैन आंसर मे बी वन बाय वन विद योर एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली यू हैव अ ह्यूज एक्सपीरियंस। नंबर 1, कि ये बताएं कि क्या लोगों को दुबई आने के लिए 1 मंथ वीज़ा रिक्वायर्ड है या दे शुड कम फॉर 3 मंथ्स, और क्यों? अ, अगर आप लोग जॉब ढूँढने आ रहे हैं दुबई, तो मैं कहूँगा कि 3 मंथ्स इज़ बेटर बिकॉज़ आई थिंक 1 मंथ बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है अगर आप यहाँ आएँगे बिकॉज़ 1 हफ़्ता तो आपको फिगर आउट करने में लग जाएगा कि अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है। और एक बार आपने अप्लाई करना स्टार्ट भी किया, तो शॉर्ट लिस्टिंग कभी डिले हो जाती है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट भी होते हैं, तो उसमें 1 हफ़्ता लगता है। कभी-कभी इंटरव्यू प्रोसेस 1-2 हफ़्ता चलता है, तो या तो अगर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है दूसरे-तीसरे हफ़्ते में, फिर आप इंटरव्यू प्रोसेस में ही होंगे, तो फिर आपको छोड़ के जाना पड़ेगा या एक्सटेंड करना पड़ेगा वीज़ा। मेरे हिसाब से तो बेटर है 3 मंथ्स। इफ यू डू नॉट हैव द एवेन्यूज़ एट द मोमेंट फॉर 3 मंथ, मैं तो कहूँगा कि आप थोड़ा वेट करके आप 3 मंथ्स के लिए आ जाएँ और आपका टाइम के हिसाब से जब आप 3 मंथ्स दे पाएँ और you have the financial situation, but it's advisable for 3 months. 1 month, I don't think it makes any sense. ओके, सेकंड थिंग, डू दे नीड टू कम टू दुबई या अपने होम टाउन से भी अप्लाई कर सकते हैं? बहुत से, बिकॉज़ अब हर चीज़ तो रिमोटली है और ऑनलाइन है, तो क्या लोगों को दुबई आना चाहिए ज़रूरी है या अपने होम टाउन से भी अप्लाई कर सकते हैं? See, दोनों रास्ते ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि there is right and wrong. I have seen a lot of people who have been hired while they were in their home countries, whether it's India, Pakistan, or any other country. And a lot of people who come here for job search, they get jobs as well. However, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ आना थोड़ा-सा बेटर है क्योंकि आप इन दुबई होते हैं, आपके पास लोकल नंबर होता है या फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए इफ दे कॉल यू, यू विल बी हियर, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। और अगर आपकी ऑलरेडी जॉब है इन इंडिया, पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री, तो फिर वो जॉब छोड़ के आपको इधर आना पड़ेगा, इट इज़ अ बिगर रिस्क। अगर आपकी अच्छी जॉब है, जॉब चल रही है, तो मैं कहूँगा कि stay in your home country, apply from there. There is good chances that you'll be get hired as well if you're suitable for a role. लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल जॉब नहीं है या in the first situation if you do not have the financial condition, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप यहाँ 3 महीने के लिए आ सकते हैं, तो उतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप घर बैठ के आराम से अपनी जॉब करें और अप्लाई करते रहें, तो लिंक्डइन वगैरह से आराम से जॉब मिल जाती है इफ़ यू आर क्वालिफाइड इनफ, यू हैव द एक्सपर्टीज़ और स्किल। तो अगर तो आपके पास कोई जॉब ऐसा है नहीं, यू जस्ट वांट टू कम टू दुबई एंड सेटल हियर और फॉर व्हाटएवर रीज़न, और आपके पास पैसे भी उतने हैं कि आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो देन इन दैट सिचुएशन इट इज़ एडवाइजेबल कि आप दुबई आ सकते हैं। राइट। दैट्स व्हाट आई थिंक। ये थैंक यू वेरी मच। व्हाट डू यू थिंक, फ्रेशर को दुबई आना चाहिए जॉब के लिए या ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों की मार्केट है? क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, आप क्या कहते हैं? ओवरऑल आई वुड से कि एक्सपीरियंस लोगों को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चांस है जॉब टू गेट अ जॉब,
लेकिन फ्रेशर्स को भी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल को फ़ॉलो करते हैं या नहीं, उसपे मेरा एक इंटरव्यू है, वन ऑफ माय टीममेट्स, देन टीममेट्स, अबरार, ही वाज़ अ फ्रेशर व्हेन ही केम हियर। फिर उसकी जॉब लग गई, फिर ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्रोग्रामेटिक एड्स। वैसे भी बहुत लोग हैं जो एज़ फ्रेशर यहाँ आए, उनको जॉब मिली। बट ऑब्वियसली इफ यू हैव अ चांस दैट यू वर्क इन इंडिया और पाकिस्तान फॉर अ व्हाइल, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप की, 1 साल का जॉब किया, it really increases the chances of you getting a job. But it's not Okay. impossible for a fresher to get a job as well. It again Right. boils down to the same thing. If you have the financial situation, या आपका यहाँ कोई ऐसा रहता है जिसके साथ आप आराम से आके रह सकते हैं, तो फ्रेशर्स को भी जॉब मिल जाती है। बट समटाइम्स फ्रेशर्स को ऐसा डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती है, वेल पेइंग जॉब्स। दे माइट हैव टू स्टार्ट विद एन इंटर्नशिप, sometimes paid, sometimes unpaid, to learn the skill. And there's one more thing, it's not about, Google ads, other platforms. You have to understand a bit about this market as well. If you, for example, come from India, Pakistan, the market there is different, the market here is different, the clients, the way things work here. So in that case, अगर आप इन योर होम कंट्री थोड़ा जॉब करके आएंगे, वो थोड़ा बेटर है। बट यहाँ आके भी ऑप्शंस आपके पास हैं, यू कैन डू इंटर्नशिप्स, and yeah, that can help you to get a job as well. राइट। वैस एक चीज बताएं कि विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू अप्लाई फॉर अ जॉब? आई मीन बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप लिंक्डइन से भी अप्लाई करें, इंडीड से भी, नौकरी.com, गल्फ टैलेंट, डूबिजल और बायू। आई मीन दे गॉट क्रेजी एंड दे आर सेंडिंग थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ सीवी। सो व्हाट इज योर experience and what do you recommend? I am a very big fan of LinkedIn. For example, even in my career, all the jobs I have got is from LinkedIn. I'm a very big fan of LinkedIn, and I think it's very, very powerful for these kind of things, to get a job, to create connections. I would say, अगर देखो, Indeed, LinkedIn और बाकी platforms में बहुत difference है, primary difference है. LinkedIn is not just for application of jobs आप apply कर रहे हो. You can make connections, you can write content which people will consume, you can create kind of a profile where you write, you engage, or basically create any kind of content. So it adds up to your profile. तो LinkedIn में for example 100 लोगों ने apply किया, they all will be treated same. But फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ऑन इंडीड। बट लिंक्डइन में अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है और आपने 100 लोगों के साथ अप्लाई किया, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपके स्किल सेट, सर्टिफिकेशंस वगैरह वगैरह ये है, तो आपको एक एज मिलता है। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, लिंक्डइन इज मोर देन इनफ। But if you have a lot of energy and time, then you can go to other platforms as well. But as far as my experience goes, I have been hiring, my team has been hiring, my company has been hiring, और मैं बाकी लोगों को भी जो जानता हूँ, I think with मुझे बाकी industries का पूरा नहीं पता है exactly, but digital media इस industry में I think most of the hiring, if not all, is done through LinkedIn. ओके, राइट। यस, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो तीन कौन से टिप्स हैं लिंक्डइन को प्रॉपर्ली यूज करने के? आई मीन लिंक्डइन पे खाली प्रोफाइल नहीं बनाना होता, या खाली अपनी पिक्चर और अपनी जेडीज चीजें नहीं डालनी होती। व्हाट आर द थ्री बेसिक और गुड थिंग्स टू कीप योर प्रोफाइल हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ रिक्रूटर्स और जॉब एजेंसीज और कंपनीज के सामने? किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं अपने आप I'll have to think about it, but the things that come on top of my mind is, the first one obviously is, you have to keep your profile open to work. That's the first thing. The second thing is you kind of engage with the right kind of hashtags and content. For example, if you go to my LinkedIn profile, it will tell you I talk about performance marketing, digital marketing, and ad tech. Now you have to kind of write content about all these, or engage with content of these particular topics or subjects, whatever you like to call it. तो ये चीज़ बहुत हेल्प आपको करेगी, क्योंकि जब कोई ढूंढ रहा होगा रिक्रूटर परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट या परफॉर्मेंस मार्केटिंग मैनेजर, तो चांसेस आर कि आपका प्रोफाइल ऊपर आएगा। और इवन व्हेन यू अप्लाई, देयर इज 100 पीपल हु अप्लाई इन
फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। तो जब एक रिक्रूटर वो लिस्ट देखती है, आपका प्रोफाइल रैंक ऊपर करेगा अगर आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ एंगेज करते हो। नॉट नेसेसरी कि आप लिख रहे हो, बट कोई और को आपने वैसा कोई ग्रुप ज्वाइन किया है, या कोई किसी ने ऐसा पोस्ट लिखा है, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने उस पे कमेंट किया है, या यू वर इन्वॉल्वड इन द डिस्कशन। सो ये 2 चीज़ें हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपना ऑब्वियसली आपको अपना जो मेटा डेटा है, मेटा डेटा व्हेन आई से मेटा डेटा लाइक आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का समरी, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल का टाइटल, आप का एक्सपीरियंस, उसमें वो पर्टिकुलर अगर आप फॉर एग्जांपल डिजिटल मीडिया स्पेशलिस्ट या पीपीसी स्पेशलिस्ट या इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके प्रोफाइल पे होनी चाहिए, इन योर समरी, इन योर जॉब डिस्क्रिप्शन। So these are the three things that came to my mind. सो इट्स मीन ये एटीएस में भी हेल्प करेगा, ये ऑटोमेटिक Yeah, ट्रैकिंग। it's the same logic. It's the same logic. ATS is for, let's say, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। सो जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो, कभी कभी वो किसी वेबसाइट पे ले जाता है उस कंपनी के जहां आप अप्लाई करते हो, तो उनका एक डेटाबेस होता है जहां पे वो सारी एप्लीकेशंस रिज्यूमेस ट्रैक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब रिक्रूटर जाता है, उनके पास एक ईमेल डेटाबेस होती है, तो वो सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स विद 4 ईयर एक्सपीरियंस बेस्ड इन इंडिया। तो इस टाइप की क्वेरीज बनाते हैं वो। तो आपका रिज्यूमे कितना फ्रेंडली है उस एटीएस को, कि उस एटीएस को समझ आता है ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है, बेस्ड इन दुबई है, या जो भी क्वेरी रिक्रूटर बनाएगा वो एटीएस है। तो लिंक्डइन में भी सेम लॉजिक यूज होता है कि अगर कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स डेजिग्नेशंस आपके प्रोफाइल में है, तो उस हिसाब से आप रैंक करते हो जब रिक्रूटर देखते हैं। इट्स द सेम लॉजिक। आई विल कॉल इट लिंक्डइन एसईओ। नो, ट्रू, नॉट ट्रू। एसईओ, लिंक्डइन सर्च ऑप्टिमाइजेशन, Optimize, एलएसओ। search optim, yeah, LSO maybe, yeah. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम दुबई आएंगे तो उसके बाद हम जो है वो एडिशनल लैंग्वेज सीखेंगे, हम अरबिक सीखेंगे। डू यू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न लोकल लैंग्वेज टू गेट अ जॉब? The answer is yes and the answer is no. For example, अगर तो आप content में हैं, you are in social media content creation role, which includes creating. Most of the big companies in Dubai, Saudi Arabia, or Gulf in general, they create both content English as well as Arabic. तो अगर आप वैसी किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो बहुत कंपनीज के अलग टीम्स भी होती है, या 2 लोग होते हैं सोशल मीडिया में, अरबिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग। तो अगर ऑब्वियसली आप उस टाइप की कंपनी में जा रहे हैं जिनका मेजर फोकस या क्लाइंटेल अरबिक स्पीकिंग है, तो ऑब्वियसली लर्निंग अरबिक गिव्स इट यू एन एज। बट ऐसा भी नहीं है कि इफ यू डोंट नो अरबिक यू कांट गेट अ जॉब। लाइक 70% ऑफ द पीपल इन आवर इंडस्ट्री हियर दे डोंट स्पीक अरबिक। और जब हम बात करेंगे टेक्निकल साइड की, वेदर यू आर let's say digital media buyer, whether you work on biddable platforms, you work on programmatic platforms or any other platforms, और or अ digital कैंपेन मैनेजर लाइक analytics, दैट, tag या। manager, you really don't need Arabic. It's not important as at all. But if you are in social media content creation, it gives you an edge, but not very, very important there as well. That's what I think and what I have seen. Okay, now the second last question is, I think I've taken a lot of time. So, It's what okay. digital marketing agencies expect from a candidate when they're looking for somebody to hire? It's a उनके very क्या good expectations question, होती है? and it can be helpful for a lot of people. So, see, it depends. If you're going for a small agency, they want you to know, for example, आप तो पीपीसी स्पेशलिस्ट हैं, या आपने खाली सोशल मीडिया पे काम किया है, या तो आप प्रोग्रामेटिक पे काम किया आपने। तो छोटी एजेंसीज का क्या होता है कि वो चाहते हैं कि आपको गूगल एनालिटिक्स भी आए, गूगल टैग मैनेजर भी आए, ये सब चीज़ें भी आए, और आपका एक थॉट प्रोसेस हो अबाउट द क्रिएटिव, आपका एक आपको मीडिया प्लानिंग का भी थोड़ा बहुत पता हो। बट एज यू ग्रो, आई मीन एज यू गो अप द लैडर, जब आप बड़ी कंपनीज के लिए जाते हैं, जैसे बिग मल्टीनेशनल एजेंसीज, they have people dedicated for ppc, they have dedicated people for social media, they have dedicated people for programmatic. Even within programmatic they have media buyers, they have ad ops people.
तो वहाँ पे you can be super specialized. But overall, generally, now we can't talk about the size of the company. Overall, I would say, as a digital marketer in current market globally, you have to be super specialized in something. You have to know something very well. Let's say Google Ads, YouTube advertising, programmatic advertising, social ads. But you also need to know the rest of the stuff as well. You have to be super specialized, but you have to know analytics, Google Tag Manager, and at least the basic information you need to know. You need to know at least how to talk to a person who a web developer, क्योंकि वेब आपको टैग्स इम्प्लीमेंट कराने, तो ये ऐसे अगर आप ऐसा है आपका कि आपको एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से आता है, you need to just have know, I mean, the basics of all the other platforms. Analytics हो गया, tag manager हो गया, तो it will really give you I mean, it will give you an edge. Thank you, Wes. And the last question is little, very, very sort of. Many people ask actually this question of बहुत से लोग special believe करते हैं कि do you think the nationalities and passport really matters for the salaries or for the hiring in a company or in an agency in digital marketing or any field, especially in digital marketing? Okay. Unfortunately, yes, it does. I mean, the people who have passports from Western countries tend to get more salaries for the same role. Sometimes it's a bit justified, but not always. It's a myth as well. But yeah, I mean, I have seen that this is true. It matters, but sometimes it's justified on companies front as well. क्योंकि उनको, for example, आप एक डायरेक्टर, अकाउंट डायरेक्टर हो, या आप एक मीडिया प्लानर हो, सीनियर मीडिया प्लानर हो, तो आगे क्लाइंट जो होता है, दे हैव, I mean, when you have good soft skills, because obviously the communication is in English, तो जब आपके सॉफ्ट स्किल्स में सबसे बड़ी चीज़ शायद लैंग्वेज ही होती है, तो जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश हो, दे आर एबल टू कम्युनिकेट बेटर, और उनकी बात में पे भरोसा भी कर लेता है आगे क्लाइंट। तो या इट हेल्प्स कंपनीज, लाइक ऑनेस्टली, लाइक इट हेल्प्स कंपनीज। तो वो एक शायद रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि जब आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं, उनके अगर प्रोजेक्ट्स होंगे अक्रॉस द ग्लोब कोई और कंट्रीज में, तो इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल अ ब्रिटिश नेशनल, तो आपको इश्यू नहीं है, आप यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, या बाकी कंट्रीज में भी, अ लॉट ऑफ कंट्रीज यू गेट वीज़ा ऑन अराइवल, जो कि पाकिस्तान और इंडिया पासपोर्ट होल्डर्स को नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा-सा हैसल हो जाता है कंपनीज़ के लिए। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो डिटरमिन करती है कि, आई मीन, व्हाई सम पीपल विद सर्टेन पासपोर्ट्स गेट हायर सैलरी। लेकिन ये यही खाली रीज़न नहीं है, देयर आर, ये एक, आई डोंट नो व्हाट आर द अदर रीज़न्स, बट द शॉर्ट आंसर इज़ येस, दैट्स ट्रू। आई मीन, people with passports from I mean Western countries, usually इनको ज़्यादा सैलरी मिलता है इंडिया पाकिस्तान नेशनल से। Okay, I do agree with you. Uh, Thank you very much. And last, I want small favor from you. मैं चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, they don't know how to create their own perfect CV or a resume template, or they don't know how to write a proper cover letter, or sometimes they don't know which recruiters they should approach, a list of recruiters. If you can share some sort of a template, that would be really helpful so that they can use कर सके उसको अपने जॉब अप्लाई करने के लिए. आई डू हैव अ टेम्पलेट। मैं आपको लिंक देता हूँ, माय वेबसाइट ब्लॉग senatorviran@.com, उस पे मेरा एक ब्लॉग है वेयर आई हैव शेयर्ड द टेम्पलेट, और मेरा एक वीडियो भी है मेरी वेबसाइट यूट्यूब चैनल पे, जो आप देख सकते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड लाइक द 8 पॉइंट्स that you need to consider before writing a resume, in terms of, I mean, the resume has to be ATS friendly. So you can watch that video and subscribe to my channel as well. So yeah, I mean, that can be helpful. I'll share the links with you, and you can put it in the description of this video if you're posting this on YouTube. थैंक यू वेरी मच ओवेस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और आई होप कि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे. इफ एनीवन हैज एनी कमेंट, यू कैन राइट डाउन, and you can also subscribe my new
channel, which is the Usman And we Sheikh can Digital do Connection. a follow-up video based on those Yes, questions. exactly, exactly. We YouTube can hack. have another video. Yeah. Thank you very much, Okay. and Thank you. have a Pleasure. lovely, lovely evening. Pleasure. Bye bye. Peace and love, guys. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye bye. Bye.